হে গাইস, হিউজ ট্রেন্ডিং এ চলতেছে এই মিউজিকটা। সো এটা রিঅ্যাকশনটা না দিয়ে পারি না, এটা অবশ্যই দিতে হবে। তোমরাও যারা হচ্ছে ভিডিওটা দেখবা তখন মনে হইব যে গানের মাঝখানে এসে মনে হইব, ও কোথায় যেন শুনছিলাম, আসলে এই গানটা আমি খুঁজতেছি। তো সেটা হচ্ছে ডিজেল মুভির মিউজিক, আর গানের টাইটেল নেম তো আমি টাইটেলে দেওয়াই আছে। তারপরে বলতেছি বীর। সো লেটস স্টার্ট। কথা না বলে আগাচ্ছে মিউজিকটা দেখি, তারপর অন্য কথা বলি। সো স্টার্ট। ওকে, এসপি সিনেমাস, ইটস তেলুগু সং। பச்சை குத்திக்கின உன்னோட பேர गाना गुना வழியில குச்சேண்டி 10,000 வீர பச்சை குத்திக்கின உன்னோட பேர வழியில குச்சேண்டி 10,000 வீர உன்னோட இருக்கணும் உலகத்தை மறக்கணும் एक्टर एक्ट्रेस உன்னோட இருக்கணும்னா உலகத்தை மறக்கணும் என்னோட குழந்தவோ வயித்துல பிறக்கணும் என்னோட குழந்தவோ வயித்துல பிறக்கணும் நான் கடல் மேல மிதக்கிற நீ ஆகாயத்துல பறக்கிற நான் கடல் மேல மிதக்கிற நீ ஆகாயத்துல பறக்கிற তোমরা যে লাইনটার জন্য অপেক্ষা করতেছো এটা কিন্তু আসতেছে। ওয়েট, জাস্ট কোরিওগ্রাফিটা দেখো। மத்தி மீனாயிர உப்பு மீன காயிர கண்ணாலதான் என்ன ஊத்தி என்ன வறுக்கிற வாய மீனா மினுக்கிற கார பொடியா சிரிக்கிற முந்தானையில் திமிங்கலத்தை நீயும் பிடிக்கிற நங்கூரமா இறங்குற இவு வலைய இழுக்கிற எம்மாடி எம்மாடி உன்னால நான் துடிக்கிறேன் பச்சை குத்திக்கின உன்னோட பேர வழியில குச்சேண்டி 10,000 வீர பச்சை குத்திக்கின உன்னோட பேர வழியில குச்சேண்டி 10,000 வீர உன்னோட இருக்கணும் உலகத்தை மறக்கணும் உன்னோட இருக்கணும்னா உலகத்தை மறக்கணும் என்னோட குழந்தவோ வயித்துல பிறக்கணும் என்னோட குழந்தவோ வயித்துல பிறக்கணும் நான் கடல் மேல மிதக்கிற நீ ஆகாயத்துல பறக்கிற நான் கடல் மேல மிதக்கிற நீ ஆகாயத்துல பறக்கிற அம்மா குட்டியே பட்டுக்குட்டியே தங்க கட்டிய மயக்கிட்டிய ওয়াও ওয়াও, বেস্ট বেস্ট, সেই ভাই বীর সং। আসলেই মিউজিকের মাঝখানে যখন স্টার্টিংটা আসে, আমরা যে ভাইরাল ক্লিপটা সেটা আমরা শুনতে শুনতে অভ্যস্ত, সেই জায়গাটা আসার পর আসলে একটা গুজবাম চলে আসছে, ফিল গুডস। তো এই জন্য এক্সাইটেড হয়ে যাচ্ছে। আমি গানের রেটিংটা দিতে পারি হচ্ছে 8/10। হ্যাঁ, মিউজিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স আমার খুব বেশি ভালো দিছে, এটা বেটার ফিল দিছে। বিজিএম টোটালি সবকিছু গুড ছিল, ওরকম উইয়ার্ড লাগে নাই। আর লিরিক্স নট আন্ডারস্ট্যান্ডিং ফর মি, বাট তবুও আমার কাছে ভালো লাগছে, ওরকম উদ্ভট মনে হয় নাই। তেলুগু লিরিক্স, তেলুগু শুনতে শুনতে এখন অভ্যস্ত হয়ে গেছে, অনেক বেশি সাউথ ইন্ডিয়ান মুভি দেখতে দেখতে। এটা মানে খারাপ লাগে না, আর আমার কাছে লাগে না। তোমাদের কাছে কেমন লাগে সেটা জানাও। আর নেক্সট টাইম কি সং নিয়ে হচ্ছে রিঅ্যাকশন দেবো সেটাও কমেন্টস করে জানাও। আর এই মিউজিকটা তোমাদের কেমন লাগলো সেটাও জানাও। আর আগে কি এই মিউজিক ভিডিওটা দেখছিলা কিনা সেটাও জানাও। আর তুমি কি মিউজিকটা খুঁজতেছিলা কিনা সেটাও জানাবা। আর হচ্ছে আসলে এটা সেই সাউথ ইন্ডিয়ান মুভি দেখছি মানে তোমাদের মতো হিন্দি ডাব দেখি অলওয়েজ এমন না। হিন্দি ডাব তো হচ্ছে বিগেস্ট মুভি যেগুলো সেগুলো আসে, বাট যেগুলা একটু মিডিয়াম বাজেটের মুভি সেগুলো তো হচ্ছে ডিরেক্ট রিলিজ করার সময় হিন্দি ডাব আসে না, ওটা করে না। তো আমরা প্রথম দিনে দেখতে চাইলে কিন্তু তেলুগু ভার্সনে দেখতে হয়, তামিল ভার্সন, মালায়ালাম বা কন্নড়, যেটাই বলো না কেন, যতগুলো ইন্ডাস্ট্রি আছে ওদের সবগুলোরই দেখতে হয় অরিজিনাল ভার্সনে। সো আজকে এই পর্যন্তই। থ্যাংকস ফর সাবস্ক্রাইবিং
মাই চ্যানেল। ও সাবস্ক্রাইব করো নাই? ওকে, সমস্যা নেই, করো। ওকে, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, টাটা।